Okay. Welcome Paramita and Thank you. congratulations. आज Thank you, आपका ma'am. एनर्जी हीलिंग और माइंड रीप्रोग्रामिंग वर्कशॉप पूरी कंप्लीट हो गई है. So how was the experience, Paramita? It was a wonderful journey. In fact, you know what? I had a lot of negative emotions for a lot of people. You know, अंदर बहुत गुस्सा था, and I had this passive aggression. Like you know, मैं किसी को like yes, basically I'm an introvert. तो मैं किसी को जाके अपना गुस्सा या कुछ दिखाती नहीं थी, लेकिन वो अंदर ही रहता था, and that was seen in my behavior. तो एक्चुअली वो पैसिव एग्रेशन आई एम फीलिंग दैट यू नो दैट इज कम आउट नाउ. अभी मुझे गुस्सा किसी पर नहीं आती है. जो गुस्सा आता भी था, अभी मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती है गुस्से की. मतलब आई मीन टू से जैसे कि अभी कोई कुछ बोल दिया तो आई एम लाइक ओके मे बी दैट पर्सन इज बिजी. पहले कैसे मैं दिखाती थी ओके यू आर बिजी, लेकिन अंदर दुख होता था. अभी आई डोंट फील दैट एनीमोर. आई फील ओके फाइन दैट पर्सन इज बिजी अंदर से. Wow, very nice. और अब पास्ट कितना बॉदर कर रहा है? जैसे हमारी जो ये वर्कशॉप है इसमें हम प्रेजेंट लाइफ का पास्ट हील करते हैं, तो अब तुम्हारा पास्ट कितना बॉदर कर रहा है? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट जब लाइक व्हेन आई वाज डूइंग द हीलिंग आई हैड मेजर प्रॉब्लम्स विद माय मदर. तो अभी कुछ कुछ इंसिडेंट सोच के ना मैं खुद ही हंस लेती थी. पहले वही इंसिडेंट सोच सोच के बहुत रोना आता था. नाउ आई लाइक यू नो आई लाफ इट आउट कि भैया इस इंसिडेंट के लिए मैंने इतना दिन तक यू नो गुस्सा पकड़ के रखी थी मम्मी के ऊपर. लाइक इट वाज नथिंग. इट वाज जस्ट एनी मदर डज इट टू टीज योर चाइल्ड. So like you know and you know another feeling which I had like you know recently is also you know I started feeling I'm a very special child of God. Like you Wow. know I have got all that which many of them don't. So this feeling of gratitude बहुत आ गया. Like this is some incident I had to share. So for hypnotherapy class, it was there on a weekend and I had packed schedule. Like you know मेरे workshops थे in school. I had clients, completely packed schedule. And you know I didn't know how to you know unpack them. Like you know I didn't know how to you know cancel all of them because they were committed long back. And पता नहीं भगवान पर you know every cloud has a silver lining. And मुझे कोविड हो गई. कोविड के कारण वो सब पैक शेड्यूल कैंसिल हो गए and I could do my empathy. So that was the time I realized that जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है I get it. And because I'm that special child of God. Wow. This is one feeling that I started having now. वाओ, वेरी नाइस. बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे हो. और कितना आप मन के अंदर ऐसा आता है कि यूजुअली व्हेन एनी पर्सन हैज अ नेगेटिव इमोशन तो बहुत अंदर एक हेल्पलेसनेस उन्हें फील होती है कि यार कैसे करें, क्या करें. आप कितना एम्पावर्ड फील करती हो अपने अंदर? इनफैक्ट अभी मुझे लगता है एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. एंड इफ इट डजंट हैव यू लर्न समथिंग एंड यू विल फाइंड सम वे आउट. यू नो वो रे ऑफ सन तो आ ही जाएगा. एंड इफ देयर इज नो रे ऑफ सन देन द क्लाउड इज हैविंग अ सिल्वर लाइनिंग. लाइक नो somewhere there is positivity and there is like you know everything is like you know everything has an answer. You have to just find it out for yourself. वाओ. और हाउ वाज द एक्सपीरियंस लर्निंग टूल टेक्निक्स इन ग्रुप? व्हाट अबाउट प्राइवेसी, जो लोगों का कंसर्न होता है? Yeah, privacy was like I was concerned about privacy. मैंने आपसे कहा नहीं मुझे individual करना है. Yeah, privacy was taken care of, completely taken care of. But yeah, and even I learned a lot. In fact, I'm using these on my clients also. So like you know I have used EFT, I have used water technique, I have used positive you know the positive affirmations, then Yes, positive Paramita, I want you to na let our audience know कि आप एक you are a psychologist, no? Yes, I'm From a Pune. psychologist, yeah, from हाँ. Pune. So I Yes. am using this on my clients also. तो And करियर में भी हेल्पफुल yeah, रही है वर्कशॉप I ना? am, and my clients are very happy. In fact, one of my clients just started EFT from yesterday. She हम्म. sent me a message in the morning, Paramita ma'am, thank you so much. It was a wonderful experience. I have forgiven.
Wow. So, so it was something that was, because I tried everything. I tried meditation with her. I tried Ho'oponopono. I tried that Yeah. also with her. I tried, I tried All journaling with kind her. of techniques, yes. Nothing worked, but this EFT really worked. So I was very happy about it. वाह, वेरी नाइस। और आप क्या क्या जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आप इन्हें रिकमेंड करना चाहोगे एनर्जी हीलिंग बिल्कुल, ट्रीटमेंट बिल्कुल, वर्कशॉप? बिल्कुल, बिल्कुल। It changed my और life. करना It changed my चाहेंगे तो outlook. हाँ, क्यों करना चाहेंगे वर्कशॉप को Actually, रिकमेंड? it changes your outlook to life. It is not, we always have this tendency to blame. कि ये बुरा है, ये मेरे साथ बुरा होता है. Like I used to say, always I used to say that, I'm a disaster. मैं जही मजाक में ही बताती थी कि मैं जहां भी जाती हूँ कुछ ना कुछ तो होता ही है, किसी का नहीं होता है, मेरा तो जरूर होगा. But now I think that I'm a special child of God. So that's the reason this happens to me. Wow, it's a drastic change. Now it's a drastic change. Yeah, very much. वेरी नाइस। तो परामिता, एक बार ये तो चलो एनर्जी हीलिंग और माइंड रिप्रोग्रामिंग वर्कशॉप का हो गया, बट आप मुझसे काफी टाइम से पहले से भी कनेक्टेड हो, और रियली आपने इंडिविजुअल जो PLR सेशंस लिए थे वो भी बहुत अमेजिंग थे। तो एक बार मैं शुरू से ही चलो डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको मेरे बारे में ही कैसे पता चला था, कैसे कनेक्ट हुए थे? Acha, so last year I was going through a lot of negative emotions. I was very dissatisfied with my job, my personal life, everything. I was going through hell. And that was the time when I met one of my friends. She said that, she does chakra healing, and I paid a lot to her. लेकिन मेरा कुछ असर हुआ नहीं. So then, when she told me about chakra healing, so being a psychologist, being curious, I started, looking out, what it is. Then I, again, being a psychologist, I was looking for hypnotherapy. And while I was looking for hypnotherapy, I came across your YouTube channel, and that's where I saw, your stories. And somewhere I had so many questions, like, which were just unanswered. And I am a kind of a person who's very introspective. Like, I find an answer. जब तक नहीं मिलता, मैं वो छोड़ती नहीं हूँ. नहीं, ये क्यों है? Like, my co-counselor keeps telling me, छोड़ दो ना, why are you thinking about it? उसमें कुछ है ही नहीं. Like, नहीं है, कुछ होगा, नहीं होगा. Like, she keeps telling this to me. लेकिन मेरा वो मन नहीं मानता था. I'm those, curious type, and I have to find an answer for it. So what I did was, I was looking and I really wanted to work on myself. There were certain questions which I had about relationships. And I had so much of anger at that point of time, so much of, low confidence. Everything was very, like, negative at that point of time. Though my job was excellent, I won't say that my job was bad, but I was not satisfied. I was not even doing my work properly, just doing for the sake of it. And that's the time I saw your video, and I was like, I want to get my past life regression. And that's how I got my, I spoke to you. And in fact, I remember when I messaged you, you didn't pick up the phone when I called up. I messaged you. In fact, when you didn't pick up the call, I felt, यार मेरी तो lucky खराब है. कोई healing करना चाहती हूँ, there होता है. Obstacles. Obstacles. But then, when I spoke to you, I felt very nice, and that's how, the healing process started. Wow. और सबसे मजेदार जो था आपका, जो मतलब इस पे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, जो आपने अपना डॉग फियर हील किया था, एंड दैट टू फ्रॉम अ एनिमल लाइफ टाइम. मतलब मुझसे यूट्यूब पे कितने लोग क्वेश्चन करते हैं, कितने लोग डाउट करते हैं, मैम एनिमल भी हम बनते हैं क्या? कहते हम क्यों नहीं बनते एनिमल में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है. एंड चलो शास्त्रों को साइड में भी रख दो, मैंने अपने सेशंस में कम से कम 100 लोगों की एनिमल लाइफ टाइम खोली है. मतलब मैंने नहीं खोली, मतलब नेचुरल खुला है. तो वो कैसा था कि आपने सपने में भी कभी सोचा था कि मतलब मेरा जो डॉग फियर है वो मेरी एनिमल लाइफ टाइम से कनेक्टेड है? नहीं. और जब वो लाइफ टाइम आपने पूरा विजिट किया, रिलीज किया, तो फियर कैसे डाउन हुआ, वो पूरा अपना स्टोरी बताओ आप. Okay, so this phobia for dogs I had not from a very small, like when I was a baby. Like, एक कुत्ते का डॉल भी देखती थी तो मैं डर के मारे रो लेती थी.
like My when I God. was 6-7 months, 8 months. In fact, मुझे ये भी याद है, when I was 1 or 2 years old, there was this dog doll, like वो जीभ निकाल के है सर हाँ, हिलाता है. यस यस, ऐसे आते हैं. हाँ. हाँ, तो whenever I used to see that dog, I used to cry. I used to howl, in fact. मतलब literally जोर जोर से रोने लगती थी. और मैं जाती थी तो वो आंटी वो डॉल भी छुपा के रखती थी, बिकॉज मैं इतना रोती थी वो डॉल देखकर. एंड देयर वाज नो रीजन, लाइक 6 महीना 7 महीने के बच्चे को वो क्या रीजन हो सकता है कि शी स्केर्ड ऑफ डॉग्स. एंड दैट वाज लाइक, और ये डर बढ़ता गया. इनफैक्ट मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, मैं लोकल से जाती थी कॉलेज. मैं रास्ते पे निकलती थी, डॉग देखती थी, घर जाती थी, मम्मी को पुल करती थी. अगर मम्मी तब बिजी रहता था तो मैं लोकल मिस करती थी, लेकिन मैं अकेले वॉक करके नहीं जाती थी. और आई शू वेट फॉर समवन टू पास बाय कॉलोनी का, कि कोई तो आए मेरे साथ कि मैं चल के जाऊं वहां तक. सो आई वाज दिस स्केर्ड, एंड दिस फोबिया केप्ट इंक्रीजिंग. मतलब मैं कहीं पर भी कुत्ता देखती तो मैं चिल्लाना, चीखना, मतलब इनफैक्ट मेरे सपने में भी नाइटमेयर्स आते हैं कुत्ते, राइट. सो it's not that I'm in love with dogs now, but then after the healing, like that was the time when I realized that I was a deer and I was actually hunted by a wolf. And वो मतलब वो गले में पकड़ like the way How was that experience? हाँ, वो पूरा डेथ सीन आपका मुझे डिस्क्राइब it करो. was a very painful, the first thing they caught my neck, then with the nails, he tore my stomach, and it was a very painful, like I could feel the pain, like I could feel that anxiety, that hurt, everything. Or it was very painful for me, but then as slowly when you started counting and you started telling, because मुझे dog क्या, मुझे एक organ क्या, मुझे dog as a whole डर लगता था. वो दांत देखो या जीभ देखो या आंखें देखो, वो हमेशा ही डर लगता था. But when you asked me dog का कौन सा part, I realized that whole dog, भैया dog ही. In fact, when you started with the PLR, you asked me to get into the mouth of a dog. मुझे वहीं पर हालत खराब हो गई थी, भैया मैं तो मर जाऊंगी, मतलब खा लेगा कुत्ता. So it was like that kind of fear that I had, and that slowly, I still repeat that affirmation ki, this dog is not going to hunt me or not going to eat me. Just there, I'm like, it is looking for food and I'm not the dog's food. I keep repeating it to myself. So abhi that I can cross by or the place where there is a dog, or I can go walking. मेरा ऐसा नहीं है कि कुत्ता बैठा है तो मैं नहीं जाऊंगी, वो सब नहीं है. But yes, I'm not in love with dogs. I would not go and hug a dog. But recently I went to a family friend's house and they had a Labrador. I went and I touched the dog. So this Wow, is that's an amazing thing. So that is a big achievement. Big for thing, me. big thing. Yeah, big thing. So पहले जब मेरे पति बोलते थे कि हाँ मैं ना कुत्ता लाऊंगा घर में, तो मैं ना एकदम गुस्सा हो जाती थी. अभी like अगर तुमको लाना है लाओ. In fact, I discuss कि ये वाला कुत्ता लाएंगे और हम रखेंगे. Oh wow. And he backs up now. He's like, नहीं फिर कौन ख्याल रखेगा? That's a 360-degree angle change. So मैं अभी it's like okay fine, if there is a dog I don't mind at home, like fine. मुझे लगता है मैं desensitized हो जाऊंगी and I will not be so scared of dogs. Yes, very nice. और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जो परमिता है बहुत डीप ट्रांस सब्जेक्ट है. मतलब जब भी परमिता ने 2-3 इंडिविजुअल मतलब जो 1-to-1 PLR सेशंस होते हैं वो लिए हैं, एंड द मोमेंट आई स्टार्ट हर सेशन, वो बहुत ज्यादा उसको बोलना नहीं पड़ता कि विजुलाइज करो, सोचो या कुछ नहीं, बहुत अपने आप बताती जाएगी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है. और जो डॉग फियर था, देखिए PLR थेरेपी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि रीलिव टू रिलीव. तो उस सेशन में जो डॉग फियर में जहां वो डियर थी और उसमें उसको पूरा जो पेन हुआ है, जो डेथ सीन में है, जो वुल्फ ने उसने पूरी तरह से उसे खाया है, तो वहां पे उसको पूरा पेन मैंने से फील करने दिया, वो फियर को फील करने दिया. और जब वो मतलब उस इमोशन को फील कर रही थी, उस वक्त मैंने और भी टेक्निक्स अप्लाई करके उसे कम्प्लीटली रिलीज करा.
तब फिर वो एकदम फिर उसको वो हल्कापन लगा। बट ये देखिए कि अगर वो रियल लाइफ नहीं होती तो कैसे वो अपने आप को ये चीज रिलीज कैसे होती। तो सोल एनिमल लाइफ टाइम में जाती है और 100% जाती है, और एनिमल लाइफ टाइम हम सभी ने जो है जिया हुआ है, और वहां से भी हम ट्रॉमा, वहां से भी हम अपने बैड एक्सपीरियंसेस लेकर आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा था आपका ये वाला। और भी जो दूसरे पीएलआर सेशन थे उनसे क्या बेनिफिट हुआ? See, I had a lot of relationship questions. Like, in this life, I had a lot of negative thoughts for many people. In fact, I have attraction also for some people whom they don't need that attraction. So I got the answer of those questions and I'm working on that. So in fact, बहुत सारे लोग जिनके साथ मेरी negative ये थे लास्ट इसमें पीएलआर सेशन में जब मैं देखा, now I have forgiven them. Like, I don't have any grudge over them or anger over them. So it doesn't matter. जैसे कि recently whom I had a very negative emotion with, is my uncle. So मुझे लगा कि ना मुझे फोन नहीं करते, मेरे पति को करते हैं and all that. But then now I recently उन्होंने कॉल भी किया था, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. Like, okay fine, कॉल किया उनको. Like that anger didn't come, that aggression didn't come, nothing. Like I was very neutral about the whole thing. It's not that I'm in love with him, but yeah, neutral about. पहले जैसे कि एकदम negativity निकलती थी, अब it's like okay fine, accept it. Very nice, very nice. Thank you so much, Paramita, for this lovely feedback. And good luck for your career, for your life, relationships. और अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बचा है आपका करने के लिए, हाँ? So again, complete your journey with law of attraction. उसके बाद हम फिर से एक इंटरव्यू अपना शूट करेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आपसे बात करके, और सब सारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thanks to you actually for guiding me.